सर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल होगा? यस, नो प्रॉब्लम। यस यस, एक मिनट आपने बेसिक पूरा कंप्लीट किया है? सर, एक मिनट, थोड़ा विजिबिलिटी। सर एक्चुअली मुझे टॉपिक वाइज ही देना था ना मॉक, तो अभी एक दो मीटिंग्स में टॉपिक वाइज ही दूंगी। तो बेसिक जो इंट्रो वगैरह हॉबी नेटिव और लेबोरेटरी एमएससी प्रोजेक्ट, उस पर कुछ काम किया है अभी कि नहीं? अभी सिर्फ टॉपिक डायरेक्ट? रोज में डेली एक दूंगी ना, तो एक एक चीज साथ साथ में इंट्रोड्यूस करती चलूंगी। तो अभी स्टार्टिंग से करें इंट्रो से कि डायरेक्ट टॉपिक? सर अभी एक दो मीटिंग्स आप डायरेक्ट टॉपिक से करो, एक बार मेरा थोड़ा फ्लो बन जाएगा तो फिर सारा करते हैं। ये तो आज कौन से टॉपिक किया है आपने? सर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया है प्रिपेयर, उसमें ऑर्गल डायग्राम्स वाला पोर्शन अभी मेरा थोड़ा रहता है, वो मैं कल दूंगी, बाकी कोऑर्डिनेशन प्रिपेयर्ड है। कोऑर्डिनेशन में आपने क्या किया है आज, ये बता दीजिए। बेसिक किया है और? सर कोऑर्डिनेशन में मैंने बेसिक करा है, और उसका जो आइसोमेरिज्म वगैरह का होता है और जो थ्योरीज हैं उसमें वर्नर की और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरीज कर ली हैं। ऑर्गल डायग्राम्स कर रही हूँ, कल तक हो जाएगा वो भी। यस, कोई नहीं। कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, मैग्नेटिज्म में, फिर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म में। मैं आपको एक बार बता देता हूँ यस सर। आपने क्या किया हुआ है। देखो, फर्स्ट टॉपिक आता है बेसिक कोऑर्डिनेशन, है ना? इसमें वर्ना यस सर। थ्योरी वगैरह सारी चीजें आती हैं। ये तो लिगेंड्स वगैरह, ये तो हो गया वन टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आता है आइसोमेरिक। थर्ड आता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। फोर है थ्योरीज है इतनी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एलएफटी, सीएफटी। और फिर उसके बाद 5 नंबर आता है कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है, ट्राइसल मेटल वगैरह। और 6 नंबर है मैग्नेटिज्म। और 7 नंबर है स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म। इस तरह से हम तैयारी करते हैं। तो आपने इसमें से क्या क्या किया है ये बता दीजिए, फिर मैं उसी हिसाब से स्टार्ट करूंगा बेसिक से। थ्योरी थ्योरीज तक किया है। इस थ्योरी तक, ठीक है। तो यस फर्स्ट सर। हम आज से स्टार्ट करते हैं बेसिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके सर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देन विल बी डिस्कस। फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। Sir, my name is Preeti Mehra. I am from Kangra, Himachal Pradesh. I have done my 10th and 12th from Lotus Senior Secondary Public School, Indora, affiliated under Himachal Board. Then I have done my graduation with chemistry, physics, and mathematics from Government Degree College, Dharamshala. Uh, and then I pursued my master's in chemistry from Kanya Mahavidyalaya, Jalandhar, affiliated under Guru Nanak Dev University. यस, गुड। Let me start. Today topic is coordination chemistry. What is coordination chemistry? So in coordination chemistry, what we do कि हम देखते हैं, हम कोई आयन लेते हैं, मेटल आयन लेते हैं, हम देखते हैं कि वो कैसे लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करके हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स दे रहा है जिनका हमारी आज की फील्ड में मेडिसिनल लाइन में भी बहुत यूज है। तो एक हिसाब से देखे जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई एक सेंट्रल मेटल आयन होता है, वो ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप्स या फिर न्यूट्रल लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। Yes, good. Coordination complex. कोई any example of coordination complex? सर डू आई हैव टू राइट हियर? Yes, sure. First, write one topic, then start. Sir, as you can see, this is coordination compound in which the central metal ion is cobalt 3 positive. The coordination number of the central metal ion is 6. It is coordinated to 6 neutral ammonia molecules. Here ammonia is acting as a ligand.
the entity enclosed within the square bracket is called coordination sphere, and the entity outside the coordination sphere is called ionization sphere. Yes. Complex is CO NH3 का Cobalt 6 ammonia, then 3 chlorides. Yes. Can you explain? Which one? Central metal and oxidation number, oxidation sphere, coordination sphere, ionization sphere, Yes, sir. central metal Sir, here, liquid. Yes. Can you explain one by one point? yes, sir. Sir, here, cobalt 3 positive is our central metal ion. The number of ligands here is 6 ammonia molecules. Coordination number here for a central metal ion is 6 because it is coordinated with 6 ammonia molecules. Here the coordination sphere is this part, cobalt with 6 ammonia molecules, and the ionization sphere is this part. When we dissolve this compound in water in aqueous medium, we get these entities here. This entity is called complex ion, which, and this entity is chloride ion. Thus we can say that when we dissolve coordination compound in water, it does not lose its identity completely. Only the when we dissolve it in water, we get the ionizable part, whereas the complex ion remain intact. Yes, good. Next, move on Werner theory. What is Werner theory? Sir, firstly I have to give its postulates. Yes. Sir, Werner theory says that a metal ion consists of two valencies, primary valency and secondary valency. The primary valency gives us information about the oxidation state of the metal ion, whereas the secondary valency gives us information about the coordination number, or we can say geometry of the complex. The primary valency is ionizable, whereas the secondary valency is non-ionizable. Primary valency is usually satisfied by the negative ions, whereas secondary valency is satisfied by the negative ions as well as the neutral molecules. The secondary valency gives us information about the coordination number, or we can say geometry of the complex. It is always fixed for a given compound. Werner said that the negative ions, there are some negative ions which may satisfy both primary as well as secondary valencies, thus they show dual nature. Yes. For the example of primary and secondary valency? Yes, sir. So here we can take the example. This. Here cobalt 3 positive is the central metal ion. Here the primary valency is satisfied these two chloride ions plus this chloride ion. And the secondary valency is satisfied by the 5 ammonia molecules plus this chloride molecule. If we want to represent this structure, we will represent it as the secondary valency is always represented by a solid line. Yes.
Here I have represented all the secondary valencies of the cobalt 3 positive ion. Uh, this primary valency is represented by a dotted line. Here we can see that this chloride ion, it is satisfying both secondary as well as primary valency. Thus, it shows dual nature here. Yes, good. What the main purpose of Werner theory in coordination? Sir, Werner was first to propose any theory in coordination chemistry. He gave this theory, uh, but it was a theoretical concept. According to his theory, he proposed different structures by some techniques like precipitation techniques or conductance measurements to give evidence in regarding to these structure, that when we ionize a coordination compound, what we get in water, which part is ionizable or which is not. But later modifications were made because this theory was not able to give us the color spectra of the molecules, does not tell us about the orbitals of the metal and the ligands involved. So it was just a theoretical concept put forward by him. Yes, good. Any limitation of Werner theory? Since this theory does not give us any information about the color and spectra of the coordination compounds, this theory does not tell us about the orbitals that are involved in the bonding. It does not give any information about the strong and weak field complexes, and does not tell us about the magnetic properties of the compound. Yes, good. Next, move on ligands. What is ligands? How many types of ligands in coordination chemistry? What the main application of ligands? Explain one by one point. So ligand is a species with at least one donatable lone pair of the electrons. A ligand should have at least one lone pair of electrons which it can donate to a metal ion. Uh, if we go towards its classification, ligands are classified on the basis of a number of electron pairs it gives to a metal ion. These are generally monodentate, bidentate, tridentate. Uh, but the ligands which donate two or more lone pair of the electrons, we classify them as polydentate ligands. The example of monodentate ligands are OH negative, Cl negative, ammonia, water. The examples of bidentate ligands are ethylene diamine, oxalate. Then, if we talk about the tridentate ligand, we can take the example of diethylene triamine. In polydentate ligands, we can take the example of EDTA, ethylene diamine tetraacetate. Yes. What the difference between negative, positive, and neutral ligands? Difference and examples. Sir, the negative, we can take the examples of negative ligands as OH negative,
Cl negative, neutral ligands, ammonia, water, and positive ligands are NO positive. So the basic difference between all three of them is in negative ligand, the this negative charge is responsible for the electron donation, while in the neutral ligands, the lone pair of the electrons are donated, while in NO positive, electron donation takes place from its anti-bonding orbital. It's one lone pair is donated and one electron is donated from its anti-bonding orbital. Yes. What is ambidentate ligand? So ambidendate ligand is a type of monodendate ligand which have two or more donor atoms in its structure, but it can coordinate through one donor atom at a time. Yes. Bridging ligand. What is bridging ligand? So bridging ligands are those ligands which have two or more, which have at least two lone pair of electrons. It coordinate to two different metals or two same metals through its two lone pair of the electrons. The basic condition for a bridging ligand is that its size should be comparable with the metal ion and it should have at least two lone pair of the electrons. Yes. What is flagellated ligand? So flexidentate ligand is that ligand which can behave as monodendate as well as polydendate ligand. Yes. What's the difference between symmetrical and unsymmetrical wide-ended ligands? Example. Sir, in symmetrical bidendate ligands, both the donor atoms of a ligand are same, while as in unsymmetrical bidendate ligands, the two atoms are different. Example of symmetrical bidendate ligand is ethylene diamine, in which both the donor atoms are nitrogen, while the example of unsymmetrical bidendate ligand is oxalate. Sorry, oxalate is example of symmetrical bidendate ligand. Unsymmetrical का example हमारे पास आएगा glycinate, in which the two donor atoms are nitrogen and oxygen. Yes, good. What is macrocyclic ligands? So macrocyclic ligands are cyclic polydendate ligands, which when these are the cyclic polydendate ligands which enclose the metal ion at the central cavity. Yes. So examples are uh, chlorine ring, porphyrin ring,
Corin ring, all these are macrocyclic ligands. Yes, good. Any limitation of ligands in coordination chemistry? No, sir, I don't know about it. Yes, no problem. Next, move on. Second topic is isomery. What is Yes. isomery? Now, how many types of isomery in coordination chemistry? So basically, in isomerism, we have the same molecular formula of the compound, but according to their structure or their spatial arrangement, they are classified as structural isomerism and stereoisomerism. In structural isomerism, the molecular formula of the compound is same, but they differ in the structural arrangement around the central metal line. Whereas in stereoisomerism, the molecular formula of the compound remains same, but their spatial arrangement around the metal line is different. Then stereoisomerism is further classified into two types, optical and geometrical. In geometrical isomerism, the relative position of the ligands is different. In optical isomerism, this is shown by those in this isomerism, they can rotate the plane of the polarized light in two different directions equally. Structural isomerism further consists of following types: ionization, ionization isomerism, hydrate isomerism, ligand isomerism, coordination isomerism. Yes. Structurally, ionization, hydrate, linkage, coordination position, ligands, polymerization. Yes, na 7 types. Yes, sir. And stereoisomery, how many types? So stereoisomerism में geometrical and optical. Yes, geometrical and optical. Yes. What the difference between geometrical and optical isomery? Sir, in geometrical isomerism, the relative position of the adjacent atoms is different, while in optical isomerism, those isomers can rotate the plane of the polarized light in two directions equally. Yes. First question is basic question. What the difference between organic isomerism and inorganic isomerism? What the difference? Organic and inorganic. Yes. Sir, I don't know about it. Yes, inorganic isomerism is study in involved in metal. Organic isomerism involved in carbons. Like example is staggering, conformational isomerism, configuration isomerism, eclipse staggering. Yes. Okay. And sir, inorganic का example? Metals, any metals, presence of metal. Those we study in coordination compounds, ये सारे inorganic में आ जाएंगे. Yes, presence of metal. Okay, sir. Like chelate complex, non-chelate complex, EDTA. Yes. Yes, explain one by one. Structural isomerism. So structural isomerism. Sir, Yes. in ionization isomerism uh, is shown by those complexes which give different ions in the solution. Example is
As seen here, the molecular formula of the compound is same. It consists of 5 ammonia molecules, one bromide ion, one sulfate, and cobalt 3 positive ion. But when we ionize them, the first compound will give bromide ion, whereas the second one will give sulfate ion. So these two gives us ionization isomerism. Yes. In hydrate isomerism, the number of the water molecules given are different. This is the example of hydrate isomerism. In the first compound, we get 0 molecules of water, while in second one, we get 1 molecule of water, while the molecular formula of both the complexes is same. It consists of 1 cobalt, 4 ammonia, 2 water, and 2 chloride molecules, but they give different molecules of water. In linkage isomerism, the point of attachment of the ligand is different. It is generally shown by ambidendate ligands. We can take the example of SCN and NCS ligands here. When they will coordinate to a in a complex, the first one will coordinate through sulfur atom, while second one will coordinate through nitrogen atom. The ambidendate ligand shows linkage isomerism. Ligand isomerism is shown by those ligands which exist in more than one isomeric form. For example, if we take the example of 1,2-diaminopropane, and 1,3-diaminopropane. These two ligands, this one ligand can exist in two isomeric forms. So this shows ligand isomerism. 1,2-diaminopropane and 1,3-diaminopropane. Then we have coordination isomerism, in which both the cation and the anion are complex ions. There is exchange of ligands between the two. For example, hexaaminochlorine. Here both cation and anion are complex ions. In coordination isomerism, they can exchange their ligands such that chromium will get coordinated to 6 cyanide and cobalt will get coordinated to 6 ammonia molecules. Basically, they exchanged their ligands. Yes.
सर हो गया या कोई रहता है? यस। एनी लिमिटेशन ऑफ आइसोमेरिक? नो सर। Next topic is IUPAC nomenclature. What is IUPAC nomenclature? What is the main application of IUPAC nomenclature in coordination chemistry? सर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बेसिकली हमें एक सेट ऑफ रूल्स देता है सभी कंपाउंड्स को नेम करने के लिए। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम उनके कॉमन नेम से ज्यादातर डेजिग्नेट करते हैं, पर ये जो रूल्स हैं ये सभी पे लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग एक ही फॉर्मेट में करना इजी हो जाता है। वही रूल्स हम सभी कॉम्प्लेक्सेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सच अ वे थोड़ा नेमिंग का प्रोसेस हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम एक ही सेट ऑफ रूल्स सभी पे लगा सकते हैं। Yes. What is natural ligands? Neutral ligand. Neutral. न्यूट्रल लिगेंड्स? Yes. सर लाइक अमोनिया एंड वाटर which give lone which give their which are electrically neutral and donate lone pair of the electrons to the metal ion. Is what the name of neutral ligands in IUPAC? मतलब इनको हम कैसे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ये एज ए लिगेंड एक्ट कर रहे हैं तो इनको क्या नाम देंगे? सिंपल नाम बताइए। ये सिंपल। सर वाटर का है एक्वा एंड अमोनिया NH3 का है अमीन। यस। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का मेन पर्पस क्या है केमिस्ट्री में? क्यों लाया गया है इसको? व्हाट द मेन पर्पस ऑफ दिस वन इन केमिस्ट्री? सर ये मुझे नहीं पता। नोमेनक्लेचर के लिए ना। सर वही यूपीएससी जो बड़े मैं नोमेनक्लेचर देते हैं, कोई भी कंपाउंड का नाम देंगे उसके लिए। पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी दिया है, जो भी, वो सब आईयूपीएससी के द्वारा है। नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, थ्योरी। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? द मेन एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्चुअली किया गया था कि हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को यूज करके कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं वो बताया गया था। उसमें बताया गया था कि कोई हमारे पास जैसे कोई सेंट्रल मेटल आयन है, तो जब लिगेंड्स अप्रोच करेंगे उसे, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द लिगेंड द सेंट्रल मेटल आयन विल वेकेट इट्स ऑर्बिटल्स फॉर द अकोमोडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड। अब जितने उसने ऑर्बिटल्स वेकेट किए हैं उससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि कितने लिगेंड्स उसके साथ कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मेटल क्या करता था कि जो भी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्चुअली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो जो मेटल एटम के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और जो लिगेंड का फिल्ड ऑर्बिटल होगा उनके बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंटरमिक्सिंग करके पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं ऑफ इक्विवेलेंट एंड कंपेरेबल एनर्जी। those vacant metal orbitals then overlap with the filled ligand orbitals to form coordinate covalent bond। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल था कि इसमें वीबीटी में बॉन्ड फॉर्मेशन ऐसे होती है। देन था ये भी, इसमें पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं उनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एटलीस्ट वन ऑर्बिटल विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट द मेटल आयन। डिपेंडिंग अपॉन कितने लिगेंड्स हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं
कितने ऑर्बिटल्स मेटल ने वेकेट किए हैं, हमें कोऑर्डिनेशन नंबर की इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि उस कॉम्प्लेक्स में उस मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। और अगर हमें एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर का पता चल जाए तो हम उससे ज्योमेट्री पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट फिर इसी थ्योरी से हमें इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वाले कंसेप्ट का भी पता चला कि इफ इन अ हाइब्रिडाइजेशन वेदर इनर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व और आउटर ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व। Yes. Inner and outer sphere complex. What the difference and which one is more सर stable? सर इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस the inner d orbitals, or we say n minus 1 d orbitals, are included in the hybridization, while in outer outer d complexes, outer d orbitals of a metal ion are involved. Yes. What the limitation of VBT? Valence bond theory. सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन ये रही कि इसने हमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ये हाई हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कुछ नहीं बता सकी। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स के नेचर को नहीं एक्सप्लेन कर सकी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लिगेंड्स थे जो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में सभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर रहे थे, वाइल कुछ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जा रहे थे। वो नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का, और ना ही ये एक्सप्लेन कर पाई थी कि ऐसे क्या रीजंस है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स पेयरिंग करते हैं। ना ही ये हमें कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस की कुछ इंफॉर्मेशन दे पाई, ना उनके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में दे पाई थी कोई इंफॉर्मेशन। Yes. It could not be explained the structure of CuNH3 का whole 4 to positive. ये VBT could not explain the color and electronic spectra. VBT could not explain the reaction rate and mechanism of reaction complex. Yes. यस VBT could not explain the nature of ligands. Next theory is CFT. What is CFT? Explain. So in crystal field theory, the bond formation between the metal ion and the ligands was considered to be purely electrostatic. It considered the bonding to be purely ionic. There will be no hybridization or overlapping of the orbital. In this theory, it considered the ligands as the point charges or the point dipoles which surround the central metal ion, और जो उन लिगेंड की इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जब तक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, जब तब तक जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स थे वो डी जनरेट रहेंगे, इक्वल एनर्जी के रहेंगे। पर जैसे लिगेंड्स अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड से उनको इन्फ्लुएंस करेंगे तो उनकी जो डी जनरेसी थी वो ब्रेक हो जाती थी और वो स्प्लिट हो जाएंगे। तो ये सब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताया गया था। उसमें जो बॉन्ड था वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर किया गया था, कोवलेंट करेक्टर सीएफटी में नहीं बताया गया था।